Hello and a very warm welcome to a brand new episode of Colors of India, your weekly cultural diary on Rajya Sabha TV. I'm Teena Jha with all the latest cultural happenings in and around the city. Let's move ahead with the highlights this week. First up this week is the mega language fest held in the national capital recently. Next, a tribute to eminent Urdu writer Ismat Chughtai. And finally, an international opera with some Indian touches. Culture and language can help in bridging divisions among people of different ethnicities. That's exactly what the International Festival of Language and Culture has been doing back since 2003 by means of showcasing music and dance from across different countries in Turkey annually. Its aim is to bring students from across the globe to foster dialogue, respect and education among the world's youth. This year, the festival made its debut in India, bringing forth a fusion of different cultures. Take a look. दुनिया के हर कोने से सब अपने अपने भेष में आए हैं पूरे जोश में गाने अपने तराने Vasudeva Kutumbakam, or the world is one family. That's the theme that reverberated at the International Festival of Languages and Culture that made its debut in India this year. हम सब यहाँ विश्वास के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं जितना भी हो कठिन रास्ता बेफिक्र हम चल रहे हैं. Held at the Talkatora Stadium in the heart of New Delhi, the festival aimed at integrating the culture, religion, language and even the ethnicity of different countries. Seems like everybody's got a prize. More than 400 students from as many as 17 countries joined India in its celebration of universal harmony and brotherhood. Not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Well, ladies and gentlemen, it is time to call upon our Minister of Minority Affairs. Please put your hands together and help me in welcoming Dr. Nazma Heptullah. So nice to have you here with us. Would request you to please. We request Mr. Arson to please present a small memento as a token of appreciation from our side to Dr. Nazma Heptullah. Let's have a huge round of applause, ladies and gentlemen. Minority Affairs Minister Nazma Heptullah inaugurated the mega event. She described the participants as the real emissaries of peace. All the world is a family. ये सारा संसार एक परिवार है. The whole world is one big family. Vasudeva Kutumbakam. I don't think there's any other nation like India anywhere in the world with so many different languages, so many different ethnic groups, so many different religions, and we have lived here for many centuries, and we are going to live here and send the message of unity to the whole world. The fusion of cultures was organized by an NGO, the Educational Endowment Trust, along with the Ministry of Culture and the UN Information Center for India and Bhutan. IFLC is a platform which aims at sowing the seed of harmony and understanding among people, no matter which culture, creed or religion you belong to. We believe that we are all brothers and sisters in humanity. We believe that these ideas will be harvested in the future for friendship. Today, we are also celebrating with joy the birth anniversary of Nobel laureate Rabindranath Tagore, a great visionary
an amazing poet, and an extraordinary author. May this festival be a birthday gift to his resting soul. The International Language and Culture Festival is said to be the largest organization for promoting world languages and cultures. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. Being celebrated since 2003, it is dedicated to cultivating and educating the youth and creating platform for students to share their cultural heritage with their peers around the world. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful Well, the cultural evening was truly a delight. IFLC is, of course, trying to promote research, learning and information exchange in support of peace, friendship and understanding, building strong ties and everlasting friendship, all raising hope for world peace. With that, time for a short break on the program. We'll be right back, so don't go anywhere. On the other side, a salute to the indomitable spirit of eminent Urdu writer Ismat Chughtai. Welcome back after the break. Our next story is a theatre production on the life of an eminent Urdu writer, Ismat Chughtai. The rebellious themes and feminist approach in her work jolted regressive minds and raised many eyebrows back in the 1940s. Chughtai was a passionate writer who revolutionized the 20th century Urdu literature. Take a look for yourself. मुआफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। लोग हमें मिर्जा गालिब कहते हैं, लेकिन आप मिर्जा गालिब नहीं हैं। हो तो कोई थिएटर एक्टर, मट्टी हाउस से आए हो। आपकी तारीफ इस्मत चुगताई। It's titled Kuch Aap Beeti, Kuch Jag Beeti. कागजी है पैरहन और घरवाली, भाई इससे पहले तो हम खुद ही को एक मिर्जा मानते थे और वो मिर्जा साहिबा का एक मिर्जा। A tribute to renowned writer Ismat Chughtai on her 100th birth anniversary. लेकिन आप मिर्जा गालिब नहीं। हम मिर्जा गालिब नहीं हैं। वैसे मेकअप बहुत अच्छा किया, राशिद साहब से करा के आए हैं। अजीज साहब को भी तो वही मिर्जा गालिब बनाया था। अरे जब से ये अजीज कुरैशी ने मिर्जा गालिब करना शुरू किया है, असली मिर्जा को लोग पूछते ही नहीं। अरे बीबी हम ही मिर्जा गालिब हैं, सचमुच के। लगता है सैलरी ग्रांट बढ़ा दी गई है। हम तुम्हें मंडी हाउस से आए लगते हैं। चलिए, जब आप इतना कह रहे हैं तो मान ही लेते हैं। क्या आप मिर्जा गालिब हैं? सचमुच के। The play is based on Chughtai's short stories and her memories, which depict the struggles she faced all her life. ये क्या है? अरे देख लो। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। मुन्ने भाई के दोस्त का छोटा भाई है, डिप्टी कलेक्टर है, मुरादाबाद के लोग हैं, बड़ा अच्छा खानदान है। और तुम्हें बचपन में देख भी चुके हैं। और मुन्ने कह रहे थे कि अगर तुम पढ़ना चाहोगी तो प्राइवेट इम्तिहान भी देने देंगे।
देंगे वो लोग? An eminent Indian writer in Urdu known for the indomitable spirit and a fierce feminist ideology, Chughtai was a path breaker for women. खुदा की कसम, तुमसे शादी के लिए हाँ नहीं करूंगी। उससे क्या होगा? चूलों को देख लो, 2 साल रह गए इसकी डॉक्टरी के, उसके बाद सब बेकार। तो मैं मैट्रिक करना चाहती हूँ। उससे कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है तुम सिलाई कढ़ाई और खाना पकाना सीखो, जो जिंदगी में कभी काम आएगा। Considered the grand dame of Urdu fiction, Chughtai was one of the few Muslim writers who stayed in India after the subcontinent split. मैं पढ़ना चाहती हूँ। अम्मा मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ। अम्मा मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो एक हफ्ता रह गया लेकिन तो हम तुम्हें अलीगढ़ नहीं भेज सकते। ये जो प्ले है वो इसमें चुगताई की बायोग्राफी पर है इनफैक्ट। और दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा इसमत की जो भी है ख़ानदान, वो कहाँ से उन्होंने मतलब ये तालीम कहाँ से उनको लिखने की मिली, कि उनकी फ़ैमिली में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी कि मतलब उनकी उनकी माँ से घर में वो जो कुछ भी देखती थी उनसे इंस्पायर्ड होती थी, और वही चीज़ें उन्होंने अक्सर अपनी किताबों में लिखी है। उन पे जो बीता वही उन्होंने किताबों पे लिख दिया। और इसमत चुगताई जो थी वो बहुत बोल्ड थी, और हर एक औरत में वो एक चीज़ होती है जो अपने आप को कभी सामने नहीं ला पाती, लेकिन इसमत आपा जो हैं उन्होंने अपनी चीज़ों को लिखा। उन्होंने एक किताब के मुसन्निफ़ को एक किस्म का रिश्तेदार महसूस किया जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो उन्होंने जो भी उनके दिल में था उन्होंने सब कुछ लिख दिया। और एक होता है ना कि हम अखबार में अगर कुछ छाप दें वो चीज़ें छप जाती हैं, मतलब वो निकल के आती है। तो उन्होंने अपने दिल की बात अखबार में लिखी या अपने पेज पर लिखी, तो हर एक औरत जो है उसको उसी की तरह बोल्ड होना चाहिए हिसाब से। अरे क्या हुआ भाई? हमारे मगज खाएगा, हम पर भरोसा ही नहीं। कहते हमारी आश नहीं, हम नहीं लड़ाओगे थे। अरे Chughtai grew up to be a writer, a feminist, and an educationalist despite an orthodox Muslim family. Her work explored sexuality, middle class gentility, and other evolving conflicts in modern India. की गर्मी दिमाग चढ़ जाती है, सफाई से तमाम फासिल बातें खारिज हो जाते हैं। ए बुआ, इलाज कराए लो ना अपना। रहने दो, बैठ तो हमारे इलाज करिए। जब कल मुरन हुआ जाते कहते हैं आ जाए, हमारी बात मान लो ना, इलाज करा ले अपना। Her outspoken and controversial style of writing made her an inspiration for the young writers and intellectuals. इसमें चुगताई पर बेस्ड प्ले है। एक कम्युनिस्ट लेडी है वो। ये उस टाइम का प्ले है जब मोहम्मडन्स बुरखा पहन के घूमते थे, और वो बहुत बोल्ड उनके बहुत ज़्यादा बोल्ड उनके थॉट्स थे। जो भी वो करती थी वो बहुत बोल्डली करती थी, और वो ये नहीं समझती थी कि कोई लड़का और कोई लड़की में भेदभाव है। ठीक है, वो ये जानती थी कि एग्जैक्टली अगर वो लड़का कर सकता वो मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, वो बुरखे में रहना नहीं चाहती थी, वो दुनिया में कुछ करना चाहती थी। वो बहुत अच्छी राइटर थी इसमें चुगताई। वहाँ कोई चूहे का बच्चा भी नहीं जिससे तुम लड़ सकोगी। अम्मी मैं यहीं रहूंगी भैया के पास। Chughtai's most celebrated short story Lihaf the Quilt was published in 1942. जी हाँ, बेगम जान, जिन्हें उनके गरीब माँ बाप ने पकी उम्र के नवाब साहब के साथ बांध दिया था, क्योंकि वो निहायत ही नेक थे, हाजी थे, बहुतों को हज करा चुके थे। उनके यहाँ तालिबे इल्म रहते थे, नौजवान गोरे गोरे पतली कमर के लड़के जिनका सारा खर्च वो खुद बर्दाश्त करते थे। The story was suggestive and told from perspective of a small girl. But it was for the same story that she was dragged to court in Lahore. हमारे सभी दोस्त दोज़ख में,
बस एक हम ही यहाँ अकेले जन्नत में हैं। आप यहाँ कैसे गए? आपको तो कब्र भी नसीब ना हुई थी। चंदन गाड़ी में चिता में झोंक आए थे लोग मैंने तो की तरफ खुदा ही लोगों ने पहुंचा दिया था। हाँ? मिर्जा मैंने तो वसीयत की थी तो मेरी कहानी लिहाफ ने मुझे यहाँ जन्नत तक पहुंचा दिया। लिहाफ? हाँ, इस कहानी में मुझे कोर्ट में घसीटा, बड़े जूते खिलवाए। मरने के बाद जब मुझे दोज़ख ले जाया जा रहा था तो अचानक उनकी निगाह लिहाफ पर पड़ी और फिर फैसला हुआ कि ये जन्नत में जाएगी। Chughtai was charged with obscenity and blasphemy and was asked to apologize. ये काम कोई और नहीं कर सकता, इसलिए जन्नत के दरवाजे सिर्फ मेरे लिए खुले। सुबह मेरे जहन में रात के खौफनाक नजारे का ख्याल भी ना रहा। सुबह लिहाफ बिल्कुल मासूम नजर आ रहा था, मगर दूसरी रात मेरी आंख खुली, दोनों किसी बात पर झगड़ रही थी। रब्बो हिचकियां ले लेके रोए, फिर रकाबी चाटने जैसी आवाजें आने लगी। मैं तो घबराकर सो गई। Many angry letters were sent to the editor of the journal that published the story. But in court, Chughtai contested uncharged instead of apologizing and won the landmark case. सारा दिन हो गया, आप कुछ परेशान दिख रही हैं। चलिए ना, चल के 3 पत्ते खेलते हैं, आइए। नहीं, आइए, एक दफा आइए। Even though many of her books have been banned at various times, Chughtai continues to be one of the most prominent Urdu fiction writers of her times. पर उगाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को, पर लहलाती हैं बेटियां, स्कूल जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, आशा रहती है बेटों से, पर पूरा करती हैं बेटियां। रख दीजिए ना बेटे, तो मरहम लगाती है बेटियां, छोड़ जाते हैं ना बेटे, तब भागती है बेटियां। हजारों ख्वाहिशों से भरा है ये, पर वक्त की नजाकत समझती है बेटियां। The play truly depicted an iconoclast, an educationalist, an icon of women empowerment. But above everything else, the play showed that Chughtai was a woman who understood the complexities of a woman's mind, their inhibitions, and also their secret desires. Another short break here on the program. Still more to come on the other side. When we return, an opera performance by one of the most famous Taiwanese troupes. Welcome back once again. Now in this segment, let's take you to one of the most famous and organized Taiwanese opera troupes, presenting performances that changed the very perception of traditional theatre with fast-paced rendition of classical tunes, majestic visual feast, and boundless on-stage presence. It's the traditional opera combined with Chinese martial arts and troupes. Take a look. "86 years of knitting together and refining the art of the opera." The Ming Huayuan Arts and Cultural Group, with a combination of extraordinary performances, has been weaving a magical tapestry of colors.
来临了，对，后兄，千万不能对啊！因何不能对？ Minghua Yuan has to its credit expanding the scope of Taiwan's locally developed theatre art form, Ji to new horizons. 好怕名号相邻，如今我一定要抓到名号，作为母后的受礼来临了。对。 Into an integration of folk art, drama, poetry, music, dance, acrobatics, visual arts, movies, modern theatre techniques and much more. 姑娘啊，姑娘啊，小鬼，你哪行这么慢？我呢是算上紧啊呢，你看我打这么济话题社会。 I thoroughly enjoyed the show. It was just so amazing to have Taiwanese actors performing this opera in Delhi. It's beautiful costumes and lovely music. Touches your soul. This is just one of the opportunities you ever get because I think it could be enormous amount to pay if you have to go somewhere else. And this, I mean, knowing that this is the first time, just amazing feeling. 是啊。哎呀，姑娘，你搁看。 迄只好表一直治疗伊的好仔囝呢。有囝成亲，果然是不输人类呀。嗨 This performance is titled Lovebird's Spear, adapted from a well-loved folk tale. 那好人，心安欢喜，心放飘逸。 It describes an incident of an emperor in disguise entering into a martial arts competition held by the beautiful maiden. 是啦，好，你讲做好秀本姑娘，正是你就是人。 In a happy ending, the emperor wins both the match and the maiden's love. With its humorous dialogues, heartwarming scenes, and charming plot, the play epitomizes the compassionate and human qualities of traditional Taiwanese opera. The event was spectacular, it was splendid, the performances were enthralling, and most of all, the opera from Taiwan was fantastic. It included martial arts, and which is a beautiful thing to do. And being a martial artist myself, I really enjoyed it. Another stage performance, General of the Empire. Works around the battle scene of two armies in combat. The play presents both the acting prowess of the Taiwanese opera performers with their operatic singing and their physical mastery of traditional stage action sequences. Well, the performances here constantly challenged traditional theatre with modern techniques, giving the old form a completely new look. And that brings us to an end of this program. We'll see you same time next week with another fun-filled episode. Until then, take very good care of yourself. It's me, Teena Jha, signing off on behalf of the entire team.